waits for no one, except when it comes to your health insurance premiums. What if I tell you there's a way to lock the clock on those rising costs? That's right. Let's talk about the premium freeze benefit in health insurance. We all know health insurance premiums tend to go up as we age or when insurers adjust their rates. It can feel like an uphill climb. But with the premium freeze benefit, you can hit pause and lock in your current premium rate. This benefit lets you freeze your premium at its current level for a set period, regardless of inflation or age-related increases. Think of it as putting a cap on your health insurance costs. Why does this matter? It's especially helpful if you are on a fixed budget or nearing retirement, when managing expenses becomes more important than ever. So there is predictable cost, wherein there's no surprises, just stability. It's budget friendly, helps you plan for the future with confidence, and no impact on coverage. Your benefit remain the same during the freeze. Sounds like a win-win, right? So let's understand this with an example. Suppose एक आदमी ने 32 years की एज में पॉलिसी ली, जिसमें 31 to 35 ईयर के एज बैंड के लिए प्रीमियम 10,000 था एंड 41 to 45 एज बैंड का प्रीमियम 15,000 था. 10 साल बाद भी जब ही विल टर्न 42 years, अगर कोई क्लेम ये आदमी ने नहीं किया तो एट द एज ऑफ 42 ऑल्सो वो 10,000 प्रीमियम पे करेगा एंड ना कि 15,000. बट कुछ चीजें ध्यान देने वाली. अगर आप 30 साल के हो और 15,000 प्रीमियम के साथ एक नई हेल्थ प्लान लेते हो विद लॉक द क्लॉक फीचर्स, तो आपका प्रीमियम एंट्री एज के हिसाब से 15,000 तक फिक्स्ड रहेगा जब तक कोई क्लेम नहीं करते. पर अगर इंश्योरर ने 30 साल के लिए एनुअल प्रीमियम 18,000 कर दिया तो आपको लेटेस्ट प्रीमियम यानी 18,000 देना होगा, चाहे क्लेम करे या ना करे. एंड दूसरा, फिक्स प्रीमियम जीएसटी में इंक्लूड नहीं होता, तो अगर जीएसटी रेट्स बढ़ते हैं तो टोटल प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा. So for those looking for long-term savings and peace of mind, the premium freeze benefit is an excellent option. Thank you for watching this video. If you found this information helpful, please like and share this video. For more insurance related updates, please subscribe to this channel.